हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे केसी का कैलाश चंद्र वॉल्यूम का पैसेज नंबर 14 फॉर रिवीजन। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर आपको डेली क्लासेस की अपडेट चाहिए तो। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पैसेज नंबर 14। और जो बच्चे क्लास में आ गए हैं अपना नाम मेंशन कर दो कमेंट में। बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन, अपना नाम मेंशन कर दो। हेलो, वीडियो को लाइक कर दो जो बच्चे लास्ट में आए हैं अभी। हेलो कन्हैया। जो भी बच्चे वीडियो क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, अपना नाम मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में। आप मेंशन कर दो जो भी वर्ड पूछना है। आपको टेलीग्राम पे मैं ड्रॉ करके सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे नहीं बता पाऊंगी मैं आपको, वो भी बता दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। गणेश, गुड इवनिंग गणेश। वीडियो को लाइक कर दो, जो बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दो। कन्हैया टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। जो भी वर्ड पूछना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, जो भी बच्चे क्लास में आ गए अपना नाम मेंशन करो कमेंट में। आज हम कैलाश चंद्र का वॉल्यूम 1 का पैसेज नंबर 14 करेंगे रिवाइज, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेसिव मैगजीन, उसका पैसेज नंबर 3 एंड 4। अभी जो स्टार्ट करूँगी फर्स्टली डिक्टेशन, वो होगी कैलाश चंद्र की वॉल्यूम 1 पैसेज नंबर 14। बाकी बच्चे जो क्लास में आ गए अपना नाम मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में। इस वीक में आ जाएगा कन्हैया रिजल्ट। प्रैक्टिस करो, पढ़ लोगे। डेली प्रैक्टिस किया करो, लिखने के बाद थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, हो जाएगा। एक दो बार देखो, ट्राई करो, थोड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, उसके बाद रीड करने लग जाओगे। कहाँ से बिलोंग करते हो आप कन्हैया? डेली करो, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लो, कोई टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा तो आप इजीली इम्प्रूवमेंट करोगे। ओके, बाकी बच्चे जो क्लास में आ गए हैं अपना नाम मेंशन कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्लास में आ गए हो। गुड इवनिंग हिमानी। आज हम पैसेज नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम 1 कैलाश चंद्र। कहाँ से बिलोंग करते हो कन्हैया आप, जो कोचिंग सेंटर नहीं है आपके वहाँ पे? बाकी जो बच्चे क्लास में आ गए अपना नाम मेंशन करो, फिर मैं डिक्टेशन स्टार्ट करूँ। कौन से गांव से बिलोंग करते हो? कौशाम्बी। सर्च करो, मिल जाएगा कोई ना कोई टीचर। वीडियो को लाइक कर दो, जो बच्चे क्लास में हैं कमेंट में नाम मेंशन कर दो अपना। आप लोग रेडी रहो डिक्टेशन के लिए। पैसेज नंबर 14 रीड करूँगी मैं अभी, वॉल्यूम 1 कैलाश चंद्र। बस थोड़ी सी देर में स्टार्ट करूँगी पैसेज नंबर 14। बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन।
आपको हिंदी शॉर्टहैंड नहीं करनी, इंग्लिश शॉर्टहैंड करनी है। बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन। पैसेज नंबर 14। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कन्हैया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर डिक्टेशन। पैसेज नंबर 14, वॉल्यूम 1, कैलाश चंद्र। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दो अपनी वीडियो को। बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन। स्टार्ट करूँ? गणेश रेडी हो क्लास के लिए? हिमानी मैसेज कर दो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, डन लिख दो अगर आप लोग रेडी हो तो, यस लिख दो। ओके हिमानी, पैसेज नंबर 14 स्टार्ट कर रही हूँ, वॉल्यूम 1, कैलाश चंद्र। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। सर, नाउ आई वुड लाइक टू से something about tea. This time there is taxation on common tea, the tea that we are consuming here, so that there can be more earnings through export. But if we examine this tea industry, we will find that we are not getting good results either by the efforts of the tea board or by the efforts of government. 1/4 of the production of the whole country is represented by tea, but that much of attention is not given by the government to this industry. They think that it is already getting foreign earning, and so it should continue to get it. But efforts should be made not only to develop this industry but also to improve the industry through research and other things. As you know, in some parts, the foreign companies which are working here are neglecting this industry. They are only after the profits. They are not thinking of the development of the industry. There is room for development in many respects, but it all depends upon research work, and research stations should be set up wherever there is neglect. No doubt the tea board is there, but the tea board is not seeing to these things. That is our complaint. In the tea board, people are there who are not at all eager to see how this industry could be developed, how we could earn more profits, how the quality could be improved, and how the quantity could be increased. We are not seeing to that. I come from a part where the tea industry plays an important part in the economy of that area. But I find that it is being neglected from year to year, and no attention is given to it. I find that there is
this drought manic in the tea plantations. As a result, no further improvement in plantation is made. There, the development of tea can be undertaken. I only suggest this to our finance minister. When you are giving relief to coffee, why are you not giving relief to tea, which is earning much more foreign exchange? I humbly our finance minister to see to it and remove this burden on common tea. Now I would like to say a word about betelnut. There is taxation on betelnut which is imported. In my part, large quantities of betel nuts are being smuggled. So there was a representation from that area saying that betel nut should also come within the purview of customs duty and that part should be declared a port. A representation was made to the finance ministry as also the commerce and industry ministry, but nothing is done. I urge upon them to see to this whether smuggling, which is giving no benefit to the government and which is going to be increased, cannot be stopped. Though our land customs department is there, it cannot deal with smuggling effectively. Smuggling is going on. So, if you want to stop it, some definite steps should be taken and the representation which was made from that part should be given due consideration. Now, some other friends also touched upon rural economy and cottage and village industries. One thing we must do, that is, we must remove the disparity between the town and the village. If we are to remove it, what should be done? We should develop small industries, village industries, and cottage industries. How can they be developed? For that, power should be there. Now, my honorable friend was saying that out of 6 lakhs of villages, only 19,000 villages have been electrified. This is meager if village electrification is not given due consideration. We cannot make progress. When our draft 5-year plan was discussed among members of parliament, I asked for information about how much of village electrification was contemplated in the third 5-year plan. The answer was very unsatisfactory. Unless you develop your village industries, how can you advance? They are also contemplating to employ the surplus labor and also agricultural peasants who are not
wholly employed to develop village industries and to make a plan. But unless power is supplied, unless you have a good scheme of rural electrification, how can village industries be developed in these modern days? We say big things, we say here, and we shout from housetops that so much is being done for the rural areas, but actually we are not doing what should be done. If rural electrification is there, then rural industries can be developed, otherwise they cannot be developed. Unemployment cannot be solved. The only solution for unemployment is the development of small industries and cottage industries. Otherwise, unemployment will increase year by year and there will be frustration among young men, particularly among the educated. Stop. सभी ने डिक्टेशन लिख लिए तो यस लिख दो, कमेंट बॉक्स में डन लिख दो। ये पैसेज नंबर 14 था, वॉल्यूम कैलाश चंद्र। ओके, इसके बाद जो पैसेज स्टार्ट होगा वो प्रोग्रेसिव मैगजीन का होगा, फरवरी मंथ 2025। ओके, पैसेज नंबर 3 and 4। सो बी रेडी योर नेक्स्ट डिक्टेशन। थोड़ी देर में डिक्टेशन स्टार्ट करती हूँ, जब तक आप लोग गो थ्रू कर लो, थोड़ा सा डिक्टेशन देख लो, पैसेज नंबर 3 and 4। ओके हिमानी, साउंड क्लियर थी हिमानी? वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? सेशन को लाइक कर दो जो भी बच्चे टेस्ट से लिख रहे हैं। बेशक अपना नाम मेंशन मत करो, बट लाइक तो कर दो वीडियो को। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दो। अपना नाम मेंशन मत करो कमेंट बॉक्स में, लेकिन लाइक कर दो। ओके हिमानी, पैसेज नंबर 3 and 4 स्टार्ट करूंगी प्रोग्रेसिव का, पैसेज फरवरी 2025। सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट डिक्टेशन। कन्हैया स्पीड 100 की नहीं थी, ये मैक्सिमम 85 वर्ड पर मिनट, 80 to 85। जो भी बच्चे ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अपना नाम मेंशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो। गणेश, आपने डिक्टेशन लिख ली? कमेंट बॉक्स में यस लिखो। पैसेज नंबर स्टार्ट करेंगे फरवरी का 3 and 4। 2 मिनट में आपकी डिक्टेशन स्टार्ट करती हूँ। प्रोग्रेसिव मैगजीन 2025, पैसेज नंबर 3 and 4। और जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। जो भी बच्चे डिक्टेशन लिख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, अपना नाम कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो अगर आप क्लास ले रहे हो तो। गणेश, आपका पैसेज हो गया कंप्लीट? यस लिखो कमेंट बॉक्स में। हिमानी, पैसेज देख लो एक बार आप। बस 2 मिनट में डिक्टेशन स्टार्ट कर रही हूँ। पैसेज नंबर 3 and 4, फरवरी 2025, प्रोग्रेसिव मैगजीन। सो बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन। आप 12th में हो हार्दिक तो वेट करो, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। ओके रिपुंजे, बस 2 मिनट में स्टार्ट करो, 2 मिनट दे दो बस। बी रेडी फॉर योर डिक्टेशन, पैसेज नंबर 3 and 4।
February 2025. So now I am going to start your dictation. Dictation start now. Your address has referred to the economic resolution of the AICC session and what you call the bewildering changes taking place in rapid succession. I think changes can seem to be bewildering only to those who wish to remain where they are. Those who wish to go ahead see the changes as part of the changes which are coming about in the entire world. And while you may complain that changes are taking place too fast, let me tell you that there are many in the country who feel that the changes are not taking place fast enough. I do not dispute. In fact, I have said so many times that the private sector has made a substantial contribution in bringing about rapid industrialization and in broadening and diversifying the industrial base of our economy. But business and industry should be the first to acknowledge that this process of development had itself brought in its wake certain tensions and new problems, and unless these are effectively tackled, further development will be harmed. Our new economic and social policy resolution only seeks to identify the basic causes of tensions and unrest and to remove them. I welcome your statement that the business community is aware of its obligation. This will improve the image of businessmen in the society of which they are a part. It is possible to draw a minimum program of action and to implement it vigorously. Perhaps I could indicate a few possible directions in which business and industry could act in concert and could demonstrate their awareness of their social obligations. One of the most serious problems facing us is the adulteration of food and drugs. It is a widespread evil which cannot be put down by government action alone. Enlightened sections of the business community could mount a campaign against this evil which not only deprives the consumer of the value of his money but in many cases poses a positive health hazard. Nothing damages the public image of the business community in India so much as this unethical practice. Another social evil
is rather a complex of social evils. It is what is termed as luxurious consumption. This is undesirable by itself because it dissipates the savings of the community into unproductive channels. It is both the cause and the effect of other anti-social practices such as tax evasion and tax avoidance. In Mumbai, you have certain specific problems. I refer to one problem which is mentioned to me by every single foreign tourist who come to Mumbai is the entrance to the city. Now, this is something which I have mentioned to the Chief Minister on every drive into the city and at practically every public forum where I have spoken. And I think this is a matter which the citizens of Mumbai should take up on a large scale, whether it is the women's organizations, whether it is the business community or anybody else. I think that if everybody acts together, it can be tackled. It is not a very large area, and I do not think that finances alone stand in the way. It is not only the image of Mumbai which is suffering, but Mumbai being one of the important gateways to India. It is the image of India which suffer thereby. You have, Mr. President, mentioned in your address the present policy of the government, which is to encourage new entrepreneurship and talent. But what have businessmen done to identify and promote such talent, of which there is no dearth in the country? The bigger business and industrial establishment, by trying to foreclose profitable lines of business and sometimes by seeking to produce everything under the same roof or in allied establishments, succeed in keeping out new talent from entering the business field. Associations such as yours and other chambers of commerce should draw up concrete scheme to foster new entrepreneurship and talent. One suggestion which was made at the last meeting of the custodians of the nationalized banks was that some of the senior and professionally qualified executives in bigger establishments who have the necessary skill could step out and start small scale enterprises to provide employment to young engineers and other technical personnel. They will
Of course, get all help from the financial institutions in the public sector. Business associations could also play an important and more active part in encouraging businessmen and industrialists in the industrially backward areas. As regards the organizational setup of the new nationalized banks, I think there is hardly any need for me to reiterate the assurance which I have already given. That is, that we do not propose to set up a top heavy organization, and we do envisage maximum possible freedom and flexibility of operation of individual banks, consistent only with regard certain broad social objectives, and that the functioning will be completely insulated from extraneous political influences. But we do envisage that the banks should function as an active instrument for the furtherance of the economic and social objectives. Stop. सबने डिक्टेशन लिख ली है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। डेली 2 पैसेज होते हैं, एक कैलाश चंद्र का और एक प्रोग्रेसिव मैगजीन का। कैलाश चंद्र की रिवीजन चल रही है। कल का जो पैसेज होगा कैलाश चंद्र का वो पैसेज नंबर 15 होगा और टेलीग्राम पे लिंक शेयर हो जाएगा क्लास का। सो जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, उसी पे ही आपको डिटेल्स मिलेंगी। ओके यश, बाकी सब पे यस लिख दो। ओके हिमानी, डन लिख दो जिसने भी पैसेज कंप्लीट कर लिया है अपना। गणेश आप भी लिख रहे हो पैसेज, आपका कमेंट नहीं आया। ओके रिपुंजय, रिपुंजय ट्रांसलेट कर लेना ये पैसेज जो भी लिखा है अभी आपने। ओके, और जो बच्चे लास्ट में जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो। जो भी कल की टाइमिंग होगी आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ओके बाय ऑल ऑफ यू। ओके गणेश, आपका बीच में मैसेज नहीं आया था ना, तो मुझे लगा आपके लेफ्ट हो गई है क्लास। ओके बाय ऑल ऑफ यू, बाय।